Hello dosto. So I know that till now we've only been talking about the students of the running year. So now we'll be dedicating a bit of time to our repeater students because our repeater students are just as dear to us as our running students, right? So now it's almost the end of January and February is coming around, and since your exam is in May, it means that you have around 3 months left, just about 3 months left to your NEET exam. So in this video, we'll be discussing a schedule for repeater students regarding how they can strengthen their prep for the NEET exam in these 3 months. So these 3 months, we'll be dividing it into two parts. The first segment, the first 30 days will be keeping for revision and review of the chapters. मतलब जो आपका जो पूरा syllabus है उसको एक बार revise करना and just reviewing the important MCQs and all. So for your benefit, I have made a schedule, a day by day schedule actually. So मैंने every day एक morning session study session दिया है और एक evening study session दिया है. So 6 hours each. Now don't complain that this is a lot of time because when your exam is just so close and you are a repeater student who is already giving a gap year for your NEET, you should be dedicating 12 hours a day to your study. I know it's a long time, lekin there is no other way. You have to give this amount of time for at least the last 3 months before your NEET exam, right? Okay, so मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन दोनों है और मैंने इधर डे 1 2 3 4 करके दिया है. आई हैव इंटेंशनली नॉट मेंशन एनी डेट्स. आई हैव मेंशन डे 1 2 3 4 टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल फॉर यू. मतलब आप कौन से डेट से स्टार्ट करने वाले हो, दैट्स अप टू यू. मतलब इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 20 लाइक 1st February. इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 20th of January. दैट्स completely up to you. But I have just, and that's to keep that flexibility, I have only mentioned day 1 2 3 4, correct? So this is a schedule, like the first 15 days ka schedule, and next 15 days is mentioned in the next slide. So you can just go through it. Like I will not be telling you the exact kaun se din mein kya hai because that will just become very repetitive and boring for you. It's already mentioned on the slide. So you should just take a screenshot of this. एंड जैसा कि आप देख रहे हो कुछ कुछ जगहों में मैंने ब्लैंक रखा है, एक प्लस दे रखा है. सो दैट प्लस इंडिकेट्स एक्स्ट्रा डेज. मतलब फॉर एग्जांपल आपने 4 दिन पढ़ाई किया, रिविजन किया और उसमें से मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक चैप्टर का आपका भी काम रह गया है, आपने फुल कंप्लीट नहीं कर पाए हो. In that case, you can use that extra day to complete that work. That's why I've given a few extra days here and there. डे 5 में थोड़ा एक सेशन 6 आवर्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है, फिर डे 8 में एक सेशन एक्स्ट्रा है, डे 12 में भी एक सेशन एक्स्ट्रा है. सो यू कैन जस्ट complete any backlogs or anything during those days. So now when I say studying and revising, what does that mean? So bio में and chemistry में you basically have to read NCERT. Do not refer to any other book whenever you study these chapters. रीड NCERT ऑफ दैट चैप्टर पॉजिटिवली एकदम, बिकॉज उधर ही से उठा उठा के क्वेश्चन आने वाला है. एंड एब्सोल्युटली इन योर लास्ट रीड जो है ये आपका लास्ट रिविजन है. लास्ट रिविजन में आपको NCERT से ही करना है. सो प्लीज़ रीड NCERT स्पेशली फॉर बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ट्राई टू रीड NCERT. For your physical chemistry and physics, you don't require NCERT as much, more of concepts and formula based. So when you're doing your bio, organic and inorganic chemistry, do NCERT, and उसके बाद आपने, I am hoping that you have solved MCQs of the chapters previously during your preparation. And so आप go back to those MCQs, and जिन MCQs में आपका कुछ problem आया था, review those MCQs, see the solutions of those, see how to solve those, and that's how you will be revising for these subjects. Physics and inorganic, I mean physics and physical chemistry के लिए you have to review the formula. If you remember, I had told you at the very start that please maintain a copy where you write down the formula of your physics topics. So if you have followed that advice and maintained a copy like that, then this will be very easy for you. You can just review that copy once and that will be enough. So that's how you have to do your physics and physical chemistry. You have to revise the formula and then you have to go back and review all the MCQs which you found tough when you were solving it for the first time. So I will just explain this thing to you again. So कि आपको when I say revision, for example आप देख रहे हो कि every day के against में मैंने कुछ chapters के नाम लिखे हुए हैं. So how will you revise it? What is the strategy? So for bio, organic chemistry and inorganic chemistry, आपको NCERT पढ़नी है, and then you have to go back to the MCQs that you have solved during your preparation previously
एंड उनमें से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ में जो एमसीक्यू में आपका डिफ़िकल्टी रहा है, या फिर इन द एमसीक्यूज़ विच यू हैव मार्क्ड एज डिफ़िकल्ट और कुछ डाउट्स रहा है, रिव्यू दोज एमसीक्यूज़. यू डोंट हैव टू रिव्यू ऑल बिकॉज सारा रिव्यू करने का मोस्ट लाइकली आपको टाइम नहीं मिलने वाला है. सो रिव्यू दोज, एंड दैट्स हाउ यू विल रिवाइज बायो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड बाकी जो बात है आपका फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री का, फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू द formula and all the applied formulas. If you have maintained a copy like I have told you previously, then this will be very easy for you. If not, then you have to go back and refer to all the books and all, and you have to revise the formulas. And uske baad go and revise the MCQs, because physical chemistry and physics are completely numerical based. So आपको numericals देखना है, कैसे solve करना है, ये सब देखना है. So in physics and physical chemistry, instead of reviewing just the difficult ones, you can review एवरी ऑल्टरनेट MCQ दैट इज़ देयर. तो फिर आपका एक पूरा ओवरव्यू आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है और कैसे सॉल्व करना है. सो दिस इज़ वॉट इज़ ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, लाइक जो इट हैज़ बिन ऑन द स्क्रीन फॉर क्वाइट अ मिनट नाउ. दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ योर शेड्यूल. सो डे 1 to 15 मैंने पहले आपको दिखा दिया, और ये वाला डे 16 to day 30 का है. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीन शॉट ऑफ द प्रीवियस स्लाइड. इफ नॉट, यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो, गो बैक एंड टेक इट, and you take a screenshot of this slide also. This is the second half of your रिविजन शेड्यूल. तो इसमें भी ऐसा आप देख सकते हो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा डेज दिए रखे हैं, विच एज आई टोल्ड यू इज़ टू क्लियर एनी बैकलॉग्स दैट यू फेस. सो डे 16 में एक एक्स्ट्रा डे है. सो से मतलब डे 12, 13, 14 में आपने कुछ रिविजन किया, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सो यू कैन यूज़ दिस टाइम टू कंप्लीट दैट रिविजन. फिर डे 18 में इसके सेकेंड हाफ में आई हैव गिवन यू वन एक्स्ट्रा टाइम. डे 21 में एक एक्स्ट्रा डे है. फिर उसके बाद डे 28 में है और डे 30 में है. Right, and as you can notice, I've given you all the memory based stuff towards the end, like structural organization in animals, with animal kingdom, amines, organic part of class 12. These things I've put in the end because these are questions on which you have a lot of memory based questions. So थोड़ा end की तरफ रखेंगे तो it might be a little bit easier for you. Now I want to remind you कि मैंने आपके लिए जो schedule बनाया है, this is just a model schedule. So if you are someone who is generally very lost and is unable to make a schedule which is productive, then you can totally follow this. But if you are someone more of the independent type, you can understand your time limits and your patterns well, then you can make your own schedule and you can use it. But whatever you do, make your own schedule or follow mine. Please complete your revision in 30 days and don't take more time than that, because बाकी जो 2 महीना है आपके preparation का, we will be giving that for something even more important. So 30 दिन से ज़्यादा please do not take for your revision, whether you follow my schedule or make your own schedule and follow it. So this schedule that I have given you covers your entire syllabus. So you are welcome to follow it, and those who want to make your own, you can do it too. And as I have told you, there is room for some extra days where you can dedicate to backlogs and other work. So इस वीडियो में मैंने एक part of your schedule I have discussed. I have discussed the first 30 days of your 3-month plan, and in the coming video I'll be discussing regarding the next 2 months of your 3-month plan. So I have broken this videos into 2 because I don't want to bore you with a very long video. So मैंने इस वीडियो में बस एक ही पार्ट डिस्कस किया है. So stay tuned and keep solving your questions and following your revision schedules. Happy studying. Good luck.